Hello, everybody. We are back again with an excellent topic. So, my warm welcome to all the participants, to all the counselors. Good evening to you. Good morning to the overseas. Sat Sri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, Assalamu Alaikum, and Ram Ram Ji. This is a universal platform. One thing be very, very clear, this is a very universal platform. We have no interference of any religion. So I'm making it very clear before we start these topics. So today, we are going to invite the most dynamic counselor of our team. We have 32 counselors in our team. She's one of the most dynamic figure from Dubai, who has been trained in the Montessori school, personal counseling, day-to-day stress, and experience of 5 to 12 years of experience. So we are blessed to have her today, who's going to start with the topic of fear. One of the emotion that actually has killed us. We have gone through the COVID, so you can understand the fear. But it's going to be a very eye-opening session for all of you. Very eye-opening. Many things are going to be cleared. Because fear, we can only see people having fear. This is the tip of the iceberg. We do not know what is beneath it, the turmoils that are going inside. So today there's going to be a very beautiful eye-opening session done by Arvaji. And I am sure you will be having a lot of questions during the time, which you can definitely put it up in the last 10, 15 minutes. We will give you the time to give your questions where we can clear your doubts. So I will now call humbly to our respected Arvaraj. Please take over. Thank you. Thank you, Vaji. Hello, everyone. I'm back with another intense webinar on one of the strong emotions, fear. So tell me, what causes fear? You all can write in the chat box. I'm reading. What causes fear? Come on, everybody. Write it. Insecurity, yes. Unpreparedness, anger, losing something. Not in comfort zone. Yes, very good. Anxiousness. Amazing, amazing. Okay, now write, what type of fear do we all share? What fears do we have? क्या है आपके fears? Failure, okay, very good. Height, unpleasant moments. Bas, only 3 people. Come on, we have so many. Loss of something that is really close to your heart, very nice. Uncertainty, very good. Fear of unknown. Danger. Wow, I'm so glad. I think I'm going to cover up all these topics. So I hope by the end of this webinar, you all are going to go fearless. Really nice. Stress, sometimes past experiences. Beautiful, very nice. Non-cooperation, someone's behavior.
Okay, now tell me, what does it mean for our bodies? जब fear होता है, what does it mean to our bodies? क्या होता है? Oh, I have fear of everything. Neelu, I hope I can help you. Weak mind, okay. Low immunity, beautiful, very nice. Anxiety, fear of failure. Our immunity goes down, yes. Anger, losing interest, loose stomach, increase in the heart rate. Perfect. Palpitations, sweating, confusion. Wow. Deceased. Very nice. Okay, now tell me, why do we feel this fear physically? ये क्यों होता है? Why do you feel the fear? You all will feel मैं तो सिर्फ questions ही दे रही हूँ one after the other. But I'm trying to get the gist कि आप लोगों को क्या है? What do you feel? Why do we feel the fear? क्यों? That's the way the body alerts us. Very good. Signal, shaking, indication. Wow. Things become out of control, sensations, because we cannot handle mental stress, dislike. Beautiful. Very well, very, very well. Amazing. Thank you all for a wonderful response. Was very interesting. It was really very, very interesting reading all that you all have posted. Now, let's take a deeper dive into the complexities of this often overwhelming emotion and how you can view it in a more positive light. That is what we are going to focus on in our webinar today and the next 3 days. Today, we are mainly going to talk about fear in children, what they face, what happens. And why are we starting from children? Because from that's where the fear starts, you know. वो fear का जो बीज होता है ना, वो वहीं से शुरू होता है. Fear is the word we use to describe our emotional reaction to something that seems dangerous. Fear alerts us to the presence of danger or the threat of harm, whether that danger is physical or psychological. But you know what? This word fear is used in another way too. To name something a person often feels afraid of. People fear things or situations that make them feel unsafe or unsure, like many of you all have written also. जैसे कि if your spouse or any member in the house does not talk to you properly, you are afraid to confront him for the same. कि क्यों मेरे से ऐसे बात करते हैं, but you are scared to confront. आपको उसे छेड़ना नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके रेपरकेशन से आपको डर लगता है. तो आप समझते हो it's better to bear and be quiet. Is that the right thing for you? Are you happy? No. लेकिन आप क्यों नहीं कन्फ्रंट करना चाहते? बिकॉज आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है. आपको डर है कि कुछ बोलने गए और बात सुधरने के बजाय बिगड़ गई तो, and the consequences you are not ready to face. So you rather just take in rather than confront. मुझे एक बात बताए, why does a child lie? क्यों? वो जब पैदा होता है तो उसे झूठ बोलना तो नहीं आता है, लेकिन उसे डर है विद द कन्फ्रंटेशन कि अगर सच पता, बच्चा है ना, गलती करेगा, लेकिन अगर कुछ गलती की है एंड व्हेन द चाइल्ड सेज इट आउट, द रिएक्शन इज सो बैड, तो वो रिएक्शन से डरता है. सो ही लर्न्स टू लाई कि नहीं, बताना ही नहीं है, बोलो ही नहीं, अगर बोलना भी है तो झूठ बोलो, बिकॉज उसे डर है. द चाइल्ड इज फियरफुल. एंड व्हाई? बिकॉज ही हैज वेरी कंट्रोलिंग पेरेंट्स. अगर बच्चा कुछ गलती करता है
तो बच्चे को समझाओ, उसकी जगह क्यों ऐसा तुमने किया, समझ में नहीं आता है, अक्ल है कि नहीं है. See, the child is scared because of the controlling parents, controlling teachers, the controlling environment around. So you see from where fear is coming. इसीलिए we will start with the children. Because it is programmed, fear, this emotion, it is programmed into the nervous system and works like an instinct. From the time we are infants, we are equipped with the survival instincts, which are necessary to respond with fear when we sense danger or feel unsafe. ये अपनी पैदाइश से अपने साथ होता है. जैसे एक छोटा बच्चा और न्यू बॉर्न, अगर आप उंगली दोगे तो वो पकड़ लेगा, या अगर आप उसे गोद में उठाओगे तो वो आपका कोई कपड़ा पकड़ लेगा. ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है. इतने छोटे बच्चे को फियर मालूम नहीं है. दे आर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स से आता है फियर. Sometimes fear stems from the real threats, but it can also originate from imagined dangers. न्यूबॉर्न बच्चे को सही से नहीं दिखता, और जो दिखता भी है उसे समझ नहीं आता, तो वो नहीं डरता. अगर उसके पास अगर सांप आ गया तो वो डरेगा नहीं, लेकिन उसके कान बहुत तेज होते हैं. अगर जोर से आवाज आई तो वो चौंक जाता है, डर जाता है और रोना शुरू कर देता है. और अगर बच्चा सोया है तो चौंक से के उठने से और डरा हुआ होता है और बहुत ज्यादा रोता है. Sometimes fear is triggered by something that is startling or unexpected, like a loud noise. Boom! Even if it's not actually dangerous. That's because the fear reaction is activated instantly, a few microseconds faster than the thinking part of the brain that can process or evaluate कि क्या हुआ. As soon as the brain gets enough information to realize that there's no danger, oh, it's just a balloon bursting, it turns off the fear reaction. और ये realization को कितना टाइम लगता है? It just happens in seconds. जैसे आप कभी कोई दरवाजे खोलते हो और दरवाजे के पीछे से आपका कोई दोस्त आके आपको चौंका देता है. क्या होता है? आप डर जाते हो, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और जैसे ही आप रियलाइज करते हो आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो. ये सबको कितना टाइम लगता है? Just a few seconds. And the fear comes even before that, so just a microseconds. Certain fears are normal during childhood, That's because fear can be a natural reaction to feeling unsure and vulnerable. And much of what children experience is new and unfamiliar environment. सब कुछ उनके लिए पहली बार है. उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो जब कुछ नया होता है तो डर रहता है, एंजाइटी रहती है. Young kids often fear of the dark, being alone, strangers, and monsters, or other scary imaginary creatures. ये क्यों? Because they see cartoons. Cartoons में क्या होता है? यही monsters and imaginary feature, imaginary cartoons जो होते हैं, imaginary images, उनसे वो fear आती है. As they grow and learn with the support of adults, most kids are able to slowly conquer these fears and outgrow them. अब मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगी वो तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन हम अपनी लाइफ इजी करने के लिए उसे अपना लेते हैं. जैसे जब कोई बच्चा खाना नहीं खाता तो हम उसे डराते हैं, खाना नहीं खाओगे तो ऐसा होगा या वैसा होगा. तब तो बच्चा डर के खा लेता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो नहीं डरता. जब रात को वो नहीं सोते तो हम कहते हैं सो जाओ नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी. क्या हुआ? यही से शुरू होता है फियर, जो कोई बच्चे थोड़े और बड़े होके भूल जाते हैं और कोई हमेशा अंधेरे से डरते रहते हैं. रात के टाइम जब कुत्ता भौंकता है हम कहते हैं कि तब घोस्ट घूमते हैं.
है, बच्चा डर गया। रात को बाहर जाने के थॉट से भी वो कांपता है। अब मुझे ये बताए, क्या बच्चा समझ पाता है कि जब हम मम्मी पापा के साथ पार्टी में गए थे तो देरी से आए थे और तब भी द डॉग्स वर बार्किंग, लेकिन कोई घोस्ट नहीं आया? उसमें डर बैठ जाता है। और ये डर आता कहां से है? हम उनके दिमाग में डालते हैं, जो बिल्कुल कोरे कागज के जैसा है। जो हम डालते हैं वो वहां रजिस्टर हो जाता है। और जैसा मैंने अभी बताया, कोई बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और कोई बच्चे बड़े होकर भी हमेशा डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं। Who is at fault for this? What do you think? We are. Think about it. School age kids might be afraid when it's a stormy night or at a first sleepover. एंजाइटी होती है, पहली दफा किसी के घर सोने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, उनको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, क्या होगा, डरे हुए होते हैं। That fears are there. And another important fear, the fear of failing in the exams. लेकिन माइंड यू, फेल होने का इतना डर नहीं होता है जितना पेरेंट्स के रिएक्शन का डर होता है। जब थोड़े बड़े बच्चों को चैलेंजेस फेस करने होते हैं, सो दे आर वेरी वेरी फियरफुल। तब हमें क्या करना चाहिए? उनके डर को और हवा देके स्ट्रॉन्ग करना है, जो फिर परमानेंट हो जाएगा? या फिर उन्हें समझाना है that it's good to face challenges and not every time you will succeed, and it's okay to fail, but learn from your mistakes so you do not repeat them and succeed the next time? What do we do? Do we encourage them or we discourage them? अगर आपका बच्चा फेल होके घर आया है, आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कांपता है, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे, घर में कुछ हादसा हुआ था, वो स्टडी नहीं कर पाया, या वो बच्चा स्टडीज में थोड़ा वीक है, उसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, आर वी एक्सेप्टिंग इट? नहीं। हम उसे इतना गुस्सा करते हैं कि वो कैसे फेल होके आया, लो मार्क्स क्यों लेके आया। द चाइल्ड इज सो स्केर्ड, वो स्कूल जाने से भी डरता है, और जब एग्जाम्स आती है पूरी पूरी रात नहीं सोता है। ही वेट्स हिज पैंट्स। I'm sure you all must have faced that if you have done that with your children. And these children, they have a lot of hormonal changes also as and how they grow, which causes a lot of anxiety and fear. What should the adults do? Help them deal with their mental and physical problems and take their fear out? Or let them learn the hard way and let them believe in their irrational thoughts, which will be with them for the rest of their lives? What do you think? जैसे if a 13-year-old child gets her first menstrual cycle, do we tell her, अब तो तुम्हारा स्टमक बहुत दुखेगा, तुम्हें बहुत क्रैम्प्स आएंगे, you will be uncomfortable for the next 5 days, and this will happen every month, and it will only get more miserable and will be there till you are 50 or more? Oh God, what did we just do? What happens? She is dying in herself with the fear of the trauma she's going to face for the rest of her life. Can you even imagine her fear? And every month when her menstrual date is nearing, her mental frame, what is she going through? She is terrified. And because it is so much in her head, all these above symptoms happen to her because she's accepting all the negativity from the atmosphere around, and it's happening to her, and it gets more and more intense as the time goes by, to the extent that she's on heavy medications, messing up her total hormonal balance, and maybe even having to undergo sorry and even having to undergo surgery. What happened? What did you just do? What else do you think you can tell her? How can you explain to her that it's okay, a way of life? We all women go through it, and you need not be afraid. You know,
मुझे आपसे ये बात करते हुए अब ये याद आया, सो आई हैव टू टेल यू दिस। हमारी स्कूल में एक टीचर थी। जब उन्हें पता चलता था कि किसी लड़की इन आवर क्लास इज हैविंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो उसे ज्यादा काम देती, उसे ग्राउंड्स पे रन करवाती मोर देन द नॉर्मल। रोज सुबह हमारा रूटीन था, वी हैड टू रन राउंड्स इन द स्कूल ग्राउंड, एंड वो उसे ज्यादा करवाती। एंड जब टीचर कह रही है तो वी हैड टू डू इट। तब तो उस पे, बिलीव मी, ये सच्ची बात है, इतना गुस्सा आता था एंड लगता था कि ये सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। एक औरत होकर भी नहीं समझ पाती व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। लेकिन आज समझ में आता है that she saw to it that we were not sluggish and sitting in a corner during those days. उसको उस she did not want it to be that way. That took away all the fear from the head. We did get the cramps क्योंकि वो तो very normal है, होता ही है, which is very very normal. But we did not let that overcome us. We lived our lives normally. तब तो गुस्सा आता था, लेकिन आज समझ में आता है। कोई बच्चे बहुत केयरफ्री होते हैं, and some kids are more sensitive to fears and may have a tough time overcoming them. When fears last beyond the expected age, it might be a sign that someone is overly fearful, worried, or anxious. People whose fears are too intense or last too long might need help and support to overcome them. And we as parents have to help them. Let me tell you a story. Every year, Martin's parents took him to visit his grandmother to spend the summer vacation holidays. To summer holidays में एक दिन के लिए वो लोग जाते थे. And they returned home on the same train the next day. One day, the boy told his parents, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ. I want to go to grandmother's house alone. मुझे अकेले ही जाना है. After a short discussion, the parents accepted कि ठीक है, तुम अकेले जा सकते हो. ये पेरेंट्स ने सोचा कि पहले तो बहुत सोचा होगा ना कि भाई क्यों, कैसे भेज सकते हैं, छोटा है, कैसे जाएगा. लेकिन दे सेड ओके, जाने दो. दे डिसाइडेड एंड देन दे सेड ठीक है, तुम जा सकते हो. They are standing waiting for the departure of the train. Martin is sitting inside, वो सीट पे बैठा है अपनी जगह पे. They say goodbye to their son, the parents, and we all know how mother's heart is, na? She kept giving him some tips out of the window while Martin repeated to her, I know, I've been told that over 1,000 times. और कितनी दफा कहोगे, मुझे सब पता है. The train is about to leave and his father murmured in his ears, son, if you feel bad or insecure, this is for you. And he put something in his pocket, gave him a kiss, and the parents bid their son goodbye. Now Martin is alone, sitting on the train, just as he wanted, without his parents for the first time. He is so excited. He admires the landscape through the window and feels very grown up. उसको लगता है चलो मैं अकेला जा रहा हूँ, कुछ अकेला कर रहा हूँ. Around him, some strangers jostle each other and they make a lot of noise. They go in and out of the wagon. बहुत ज्यादा आवाज करते हैं. Very, disturbing होता है. The supervisor makes some comments about being alone, about Martin being alone. One person looks at him with sad eyes. अरे बेचारा बच्चा अकेला है. Martin now feels bad. Every minute that passes, now he's afraid. He bows his head. He feels cornered and alone. With tears in his eyes, he wishes he was not alone. He misses his parents and he's really afraid. Then he remembers that his dad had put something in his pocket. Trembling, he's really shaking. He looks for what his father gave him. Finding the piece of paper, he read it. क्या लिखा होगा? What do you all think? What was written on the paper? What did the father write? Any guesses? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ. The father writes, son, I am in the last car. Now you tell me, what do you think Martin felt when he read that note? His fear vanished. He got the confidence. See, this is life. We must let our children go
We must trust them, but we always have to be in the last wagon watching in case they are afraid or in case they find obstacles and don't know what to do. We have to be close to them. We have to teach them how to be strong and brave, not by curbing them, by talking of all the bad things that could happen and how dangerous it is. If Martin's parents had told, अरे कैसे जाओगे, तुम पता है अकेले नहीं जा सकते हो, गाड़ी में कौन बैठेगा, तुम्हारे बाजू में कौन होगा, कोई तुम्हें मार के चला जाएगा, कोई तुम्हारी चीजें लेके चला जाएगा, you will be robbed. You think Martin would ever be able to travel alone? वो डर बैठा होगा ना. लेकिन the parents, they did not do that. Rather, as Martin's parents did, we need to do the same. We need to prepare them to face the world without fear, while we are watching over them, are there for them in the last wagon. As long as we are still alive, our children will always need us, no matter how old they are. You know, there is another thing also for fear. A fear can be healthy also. If it cautions a person to stay safe around something, that could be very dangerous. But sometimes a fear is unnecessary and causes more caution than the situation really calls for. जैसे कि many people have a fear of public speaking, whether it's giving a report in class, speaking at an assembly, or reciting lines in the school play. Speaking in front of an audience is one of the most common fears children have. What will you do? How will you help them overcome that? और आपने सोचा है कि ये fear क्यों आता है? Because कभी at some point ये बच्चे ने किसी परफॉर्मेंस में स्टेज पे अपनी लाइंस भूल गया और सारे बच्चे उस पे हंसने लगे. सिर्फ उस वक्त ही नहीं, लेकिन काफी दिनों तक. तब से ये बच्चे में डर है. पॉसिबल है, he's so scared, he will never want to talk in public again. And ये भी पॉसिबल है कि उसके साथ नहीं हुआ ये, लेकिन उसके किसी दोस्त के साथ हुआ है. And he has seen how embarrassed his friend was. He has seen his friend cry with guilt and shame. He will never speak in front of an audience confidently. तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी मजाक उड़ानी चाहिए कि ये डरपोक है, ये उसका कॉन्फिडेंस या फिर हमें उसका कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहिए by helping him to first stand in front of the mirror alone. Okay, तुम्हें बताना है, चलो, you have something, तुम अकेले खड़े रहो कमरे में, stand in front of the mirror and say it. Then in front of your family, आपके घर में जितने हैं, in front of the whole family he is saying something. Then in front of your friends, then in the neighborhood, and finally in public. या फिर उस टीचर को बोलो, नहीं नहीं ये बहुत डरता है, उसको आप स्टेज पे खड़ा कर दो, वो करेगा. कैसे नहीं करेगा? और उसको आप स्टेज पे खड़ा कर दोगे. Which will help? See, there is a cure for everything, but you really have to work on yourself to fight fear, and you have to help your children also. Fear helps protect us. It makes us alert to danger and prepares us to deal with it. Feeling afraid is very natural and helpful. In some situations, fear can be like a warning, a signal that cautions us to be careful. जैसे अगर एक गाड़ी तेजी से आ रही है, you will get out of the way. ये आप सोच के नहीं करोगे, ये instantly हो जाएगा. Again, from where does this come? The survival instincts, जो पैदाइशी अपने साथ है. Good fear का एक दूसरा example दूं तो, the child who does not know swimming very well, वो डरेगा डीप में जाने से. लेकिन ये डर अच्छा है, उसे रिस्क लेने से बचाएगा. वो डायरेक्टली डीप में नहीं कूदेगा. लेकिन क्या ये फियर सही है? उसे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा ना. तो वो क्या करे? He will slowly and steadily learn how to swim in the deep very safely, and once he's confident, he will jump into the deep. But then that is what we have to teach the child, right?
उसको ये नहीं करना है, अरे स्विमिंग तो आ गई ना, ये आप शैलो में तो कर दी हो, डीप में भी सेम है, कूद जाओ। नहीं, उसे सिखाना है हमें। The impact of fear on children can be intense and can lead to chronic pains, which a medical doctor will not have the cure. आपको लगेगा ये बच्चा हमेशा पेट में दर्द के या सर दर्द की बातें करता है, लेकिन all his reports are clear. क्यों? Because he has because he has fear in him. Because there is nothing physically wrong with the child. If the fear is instilled in children, it is upon us adults to talk to them, make them understand, and not give air to their thoughts. Rather, make them question their irrational thoughts. कि भाई समझो, आपका fear, is it really having a base or not? हमें उन्हें समझाना है. The timing of fear is associated with long-term risks, such that childhood fears have particularly pervasive effects on well-being, including compromised immune function, leading to obesity, substance use, dysregulated stress response, accelerated biological aging, and psychopathology. So, if we see that our children are extremely fearful, we need to take it seriously, talk a lot to them, and help them work their way out of fear. And if you cannot do it, take professional help. But please, please do not take it lightly, saying once they grow old, they will grow out of fear. That does not happen if the fear is very deep rooted and if the child is very, very sensitive by nature. He or she will not overcome this emotion without help. And please do not name them as sissy for getting scared of things which you are not scared of. अरे इससे क्या डरना, इससे कोई चीज है, ये कोई डरने की चीज है? नहीं, do not do that, please. Do not laugh. Do not laugh on them, because they are having these fears. क्यों हंसना है? वो तो मासूम बच्चा है ना, उसे नहीं समझ है. Do not shout and be angry with them. इतनी छोटी बात से डरते हो, गुस्सा हो जाते हो उनके ऊपर. It will only make the situation worse. The fear will be there and keep growing stronger, and they will go on in double shell. One is of fear and the other one is of embarrassment. So please, please help your children be confident and brave and help them fight their fears. Be there for them. Thank you. Now we will have a quick recap of everything that I said. Okay. Now you all tell me, जैसे मैंने पहले बताया, the emotional reaction. जैसे I told you all, fear is the word we use to describe our emotional reaction to something that seems dangerous. Fear alerts us to the presence of danger or the threat of harm, whether that danger is physical or psychological. But the word fear, that has another meaning also. No confrontation, comfort zone. No confrontation agar hai unke paas, then the fear is there. They're scared of the consequences. They lie. Why do they lie? Q. Why do they lie? It alerts the signs of danger, the threat, the harm. ये सब होता है fear में. Fear is used in many ways. Try to understand कि ये fear क्यों आता है बच्चों में. It works like an instinct, एकदम fast into the nervous system. The nervous system sends messages to the body. We are equipped with this survival instincts. जैसे मैंने आपको बताया, वो बच्चा, छोटा बच्चा, मासूम, just born, उसे नहीं पता what is fear, लेकिन वो उंगली पकड़ेगा या आपका कोई कपड़ा पकड़ेगा. वो क्यों? Why will the child? Because they are survival instincts. है ना? And there are two types of threats: real threats and imagined dangers.
रियल थ्रेट्स आर कि भाई चलो सांप आ गया या कुछ अर्थक्वेक हो गया या दैट फियर, दोज आर रियल थ्रेट्स. लेकिन इमेजिन डेंजर्स, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसे करूंगा तो वैसा होगा, कहाँ से आता है ये सब? फ्रॉम वेयर आर दीज फियर्स कमिंग इन? ये छोटे बच्चे को, जैसे मैं कहती हुई थी कि कान बहुत तेज होते हैं, व्हेन यू शाउट जोर से वो डर जाएगा. द फियर इज ट्रिगर्ड, है ना, बाय लाउड नॉइज. और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो लाउड नॉइज, डार्क, फियर ऑफ द डार्क रहता है. एंड द ब्रेन सेंड सिग्नल्स, बहुत अंधेरा है, द ब्रेन इज सेंडिंग सिग्नल्स कि नहीं बाबा मुझे बहुत डर है, आई एम नॉट गोइंग टू दिस थिंग. अगर बलून बर्स्ट हो गया, यू गेट स्केर्ड. अगर if the child is having a first sleepover, if the child is left alone somewhere, the fear is the child is scared. Agar strangers aa gaye and the child is all alone, the child is scared. And then he starts developing all, usko usko takleef hoti hai, usko पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पसीना होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है. और वो सब जब होता है, हमें क्या करना है? हमें अपने बच्चे को समझाना है, उसे बताना है कि उसे डरना चाहिए या नहीं, या उसे बोलना चाहिए "हाँ, इतनी सी बातों के लिए डरते हो, थोड़ा तो ये ब्रेव बना करो, ये क्या है, व्हाट आर यू गेटिंग स्केर्ड ऑफ, इज इट इवन वर्थ गेटिंग स्केर्ड ऑफ?" वी ब्रिंग द फियर इन देम, हम डालते हैं वो फियर. एंड नाउ इट इज ऑन अस दैट वी रिमूव दैट फियर फ्रॉम देम. स्केरिंग चिल्ड्रन व्हेन दे डू नॉट ईट देयर फूड, क्या हम सही करते हैं? जब वो सोते नहीं है, क्या हम सही करते हैं? हम तो सिर्फ डराने में डराते हैं. क्यों? बिकॉज हमें चाहिए कि बच्चा जल्दी से सो जाए, जल्दी से खाना खा ले, सो हम फ्री हो जाए. लेकिन हम नहीं समझ पाते कि बच्चे को ये इतना कैसे इफेक्ट करता है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वी नीड टू मेक देम स्ट्रोंगर. वी नीड टू टेल देम कि ये डरने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातों से नहीं डरते हैं हम. वी मेक देम अंडरस्टैंड that it's good to face challenges. अगर फेल भी हो गए तो नेक्स्ट टाइम लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, सीखो. डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स एंड यू विल सक्सीड. लेकिन डर के मारे बैठ जाओ, झूठ बोलो, डोंट अटेम्प्ट इट अगेन, ऐसा नहीं करो. इट्स ओके. चैलेंजेस तो दुनिया में बहुत आएंगे एंड वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू फेस चैलेंजेस. हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है. वी हैव टू टेल देम दैट इट्स ओके टू बी स्केर्ड. बट स्केर्ड होके उसी फियर में रहने की जरूरत नहीं है. वी कैन फाइट इट, वी कैन कम आउट ऑफ इट. वी हैव टू एनकरेज देम, नॉट डिस्करेज देम. वी हैव टू बी देयर फॉर देम. जैसे इवन आई टोल्ड यू, इफ द चाइल्ड इज फेलिंग इन एग्जाम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों फेल हुआ, क्या हुआ. Was he bullied in school? Why was he not able to give the exam properly? Why did he not study? Instead of just shouting कि बस तुम तो बेकार हो, कुछ नहीं कर पाते हो, you are useless. नहीं. When these children have to face challenges, they are really really scared. उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है. They are totally terrified. We have to be there for them. And especially when they get into their teens, hormonal changes होते हैं बहुत ज्यादा. Don't increase their anxiety. Anxiety increase करने से आपको फायदा नहीं होगा. The child will be fearful for the rest of their lives. Don't do that. उन्हें आप समझाओ that it's okay. होता है, सबको होता है, हमें भी होता था. But it is just a way of it. You will get out of it. Don't worry. We have to understand exactly like what Martin's parents did. They gave him the confidence. They were there. They let him go. They did not say कि नहीं जा सकते हो, कैसे जाओगे अकेले, समझते हो. दूसरा अगर मैं बोलूं, सपोज अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे अकेले मेरे फ्रेंड के यहाँ जाना है. चलो ये मार्टिन तो दूसरी सिटी में जा रहा था अपनी नानी के पास या दादी के पास. लेकिन अगर आपका बच्चा क्रॉस करके फ्रेंड के यहाँ जाना है, आप क्या करोगे? नहीं नहीं, अकेले कैसे रोड क्रॉस करोगे, गाड़ी आ जाएगी, बस आ जाएगी, आपको मार के चली जाएगी, तो कुछ हो जाएगा, तो वो कुत्ता आपके पीछे लग गया तो. आप ये बोलोगे या आप बच्चे को समझाओगे कि ठीक है बेटा, जाना है तो जाओ, संभल के जाना, लुक एट योर राइट, लुक एट योर लेफ्ट, सी फॉर द ट्रैफिक, क्रॉस केयरफुली, डोंट रन, स्पेशली इफ यू सी डॉग्स, डोंट रन, नहीं तो वो और आपके पीछे दौड़ेंगे. बी केयरफुल, गो कामली, एंड
you will stand at your doorstep to see your child cross the road. अब क्या करोगे? What will you do? What will it be for you? So be there for your children. Be there in the last wagon and help them fight their obstacles. Don't install the fear in them. Be there for them. As we all parents should. That is exactly what we should be doing for our children. Not, scaring them more. And even fears like public speaking. Believe me, it is a very common fear. Why? Why do they have these fears? क्यों आता है ये public speaking का? Find out. Ask the child what is he scared of? क्यों? And then help him to get over it. Not by putting him in front of an audience immediately, but slowly and steadily. तो वो धीरे धीरे the fear goes away. Help the child. Only parents can help the children. And if you really think that you cannot help your child, the fear is very chronic, it is leading him, to chronic pain, he's starting to use substance use. You know what I mean by substance use, drugs and so many other things. Agar wo shuru kar deta hai bacha just to get that fear out of his mind, don't let that happen. Help the child. And don't even run the child to a proper doctor, because physically वो बच्चे के साथ कुछ wrong नहीं है. The child is only scared. First speak to the child. And if you're not able to understand, if you're not able to take it in, if you're not able to help your child, please take it seriously and take professional help. That is the only thing that will help you. Be there. We are here to help you. All professions, means all the professionals who are into this line are having a soft corner when it comes to children and fear. So take professional help. Go to the professionals and help them. Thank you. Okay. Thank you, Arwa. Thank you very much for the enlightenment, eye-opening. So I will not take much of your time, not much of your time, because I will like to have time for your questions and your doubts. But in spirituality, I will just like to end up the session. In spirituality, it says that there are two types of fears, the desirable fears and the undesirable fears. What are the desirable fears? The desirable fears are like, if you're sitting in a place, in a city, where they have their own rules and regulations, or you can see on the road when you are going, you see the red lights, the green lights. So this is a discipline of the country that you have to stop on the red light. पर हमको ये डर होना चाहिए कि अगर if I don't, अगर मैं यहाँ नहीं रुकती हूँ और मैं चली जाती हूँ, I can create an accident. It is going to be harmful for me and for the other people. So this is a desirable fear which we must have to follow the rules and regulation of a school, of the society, of the country. We have to follow. The other desirable is what? The desirable fear is कि हमको इस चीज का डर हमेशा रहना चाहिए कि कहीं हमारा हाथ ना छूट जाए उस ईश्वर से हमारा हाथ ना छूट जाए, क्योंकि हाथ छूट गया तो समझो हम तो गए. We are going to be in a soup. और अगर हमारा हाथ उसके साथ है तो फिर डर किस चीज का? फिर डर कभी भी नहीं होगा किसी का. Now what is the undesirable? The most at present, which has actually conquered the whole of the universe, is the fake desire, the fake fear. अब देख रहे हो कितने fake fears हो रहे हैं. बिल्ली रास्ता काट के कोई काम नहीं होगा. आजकल करवा चौथ का चल रहा है, करवा चौथ इसने नहीं किया गड़बड़ हो जाएगी. अपने हस्बैंड का मैंने 1 साल का बीमा कराया हुआ है, हमको तो करना पड़ेगा. नहीं किया तो तुम नास्तिक हो. ये भी एक डर है. पीरियड्स हो गए हैं, अपने अगर रसोई में चले गए, सब कुछ अपवित्र हो जाएगा. So what I mean, there are so many fake fears, और यही fake fears and all are leading us into illusions and delusions and परम पुलेख्या के बीच लेके जा रहा है हमको, और हम वहां पे ट्रैप होते जा रहे हैं. Another fear is also fear of death. 24 hours एक डर है. उनको डर होता है. यहाँ क्या कोविड में देख लो, डर 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 के हम लोग जीते रहे एंड तक. We never realize, according to spirituality, it says, when there is fear in the mind,
the immunity level of the body goes down. When the immunity body level goes down, then these viruses and infection catches us very fast. Let us not only be death, even the diseases, they catch us fast because of the immunity level, and that is because of the fear. So what happened? The fear of death is there. किस चीज का डर? मौत जब आनी है वो तो आनी ही आनी है. But why are we dying every day? We are dying out of fear. So the fear of death is always there. Then there is a fear of what? Of losing. Losing of money. हमारी इज्जत, हमारा status, हमारे बच्चे. I will lose my children. मेरे बच्चे दूर चले जाएंगे. Always losing, fear of losing. Why we are always have a fear of losing? Because we are dependent on them. When we have to learn to be independent, we can be only independent when we are going to be a whole. We are not a whole. That is why we are dependent. So we have to learn to become independent. And to become independent, we have to get attached to our own identity. Because identity is a whole. बाहर के जितने भी चीजें, all are not a whole. They're not complete. So spirituality says that if you really want, that you should not depend on anyone, then depend on only the oneness that is inside you, which is your identity. Then there is always a fake of animosity. वैर विरोध तो बहुत है, बड़े बनाए हुए हैं, आगे पीछे बनाए हुए हैं कि नहीं? दरानी से, जेठानी से, ननान से, भाभी से, मम्मी से, सास से, ससुर से, फ्रेंड से, सबसे बनाए हुए हैं. अब कुछ थोड़ी सी बात हो जाए तो अंदर डर, कुछ ना कुछ तो हुआ कि हुआ, कोई ना कोई नुकसान तो हुआ कि हुआ. और अगर हो भी जाए तो यही डर कि किया उसी ने है, किया तो उसी ने है. So these are all the type of fears which we have, which is not desirable. We should not be having all these things. But if we have to eradicate all these fears, and which fear we should keep, we have to educate ourselves. This is how now Arwa is going to do with us in the next 2-3 days. She will be continuing and how to. So please, my humble request to all of you, that please be present. Please be present. Clear your doubts. We are working hard day in and out. We get nothing. It is all free of cost. Please, it is my humble request. She's also sitting in Dubai and she's giving a session. She traveled all the way from Pune because she had to go and give this thing. So please, my humble request to you people that please attend these sessions. डर ही सबसे बड़ा इमोशन है जो हमने पूरी जिंदगी हम डर 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 के रहे हैं. द बेस हमारा डर ही है और हमने इसी से निकलना है. So I end the session here and I will like Rimple that you can just query on with all the doubts and the questions. Yeah, thank you, Arvaji and Vaji. Lovely session. Actually, we were not aware of that, from where the fear comes. And you really opened our eyes, like it is, we got from our childhood. But I'm sure, definitely you will tell us, now we are getting awareness and how we can work on that fear. Because अभी जो हो गया वो तो हो गया अभी. अभी उसको हमें कैसे निकलना है वो हमें सीखना है. We can't blame कि मेरे parents ने ऐसे क्यों नहीं किया, मुझे पता क्यों नहीं था. That is my past. नहीं पता था. But today when we get awareness, I'm sure we all can confront our fear. We can definitely use that tools to come out of this fear. So with this, I would like, if anybody has any doubt, any questions, I'm sure we have plenty of questions. Fear to ऐसा topic है. So please come up. Ask your questions. We have Buaji here, Arvaji here. I can see many other counselors. Please also on your camera, Janima, Harpreet ji, Aminder ji. I request all my counselors, please on your cameras and put your inputs. Thank you so much. Yes, Jaswinder ji. It's my humble request, please put on your cameras. Because when we see your expressions, we can understand, we have a feeling. It is my humble request. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. एक्चुअली में अगर घर में किसी की बिहेवियर से डर लगता है, अगर
तो हमें उसके साथ मतलब लेट गो करने की कोशिश करनी चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कि अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बारे में मुझे पूछना था। ओके, मुझे आप ये बताएं, सही है आपको डर लगता है किसी से बात करने में, ओके, आपको डर क्या चीज का है? आर यू स्केर्ड कि भाई, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैं ये कर रही हूँ कि सपोज इफ इट इज योर स्पाउस और से योर मदर इन लॉ और से योर चाइल्ड, कि भाई ये घर छोड़ के चला जाएगा या ये करेगा या मुझे घर से बाहर निकाल देगा या झगड़ा और बढ़ जाएगा, क्या होगा? व्हाट इज योर हाँ, फियर? मतलब कि मेंटल पीस जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ये चीज से डर लगता सी, ये कहते है, हैं ना कि एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। अपने में ये होता है, दैट सेइंग इज दैट स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। लेकिन जब घर का माहौल ऐसा है, यू कैन नॉट स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। आपको जब बात करनी है, सपोज, जस्ट आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट सपोज, जस्ट हाइपोथेटिकली आई एम टेलिंग, अगर ये आपके हस्बैंड है या आपकी सास है, जब वो गुस्सा है या जब कुछ बोल रहे हैं या जब एजिटेटेड है, तब यू काउंट 1 to 10 इन योर हेड, तब बिल्कुल बात नहीं करें। आप 1 to 10, 1 to 100 करके बी क्वाइट। लेकिन जब वो ठंडा होते, वो ही इज नॉट ऑलवेज ऑन फायर और शी इज नॉट ऑलवेज ऑन फायर, जब मूड अच्छा है, तब एक्सप्लेन टू देम, टॉक टू देम प्रॉपरली, कि भाई देखो, मैं भी बोल सकती थी, मुझे भी आता है बोलना, लेकिन आई डेंट वांट टू, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमारे बीच में कुछ ये हो जाए। आई वांट टू टेल यू कि भाई ये ऐसे नहीं करो, दिस इज हर्टिंग और दिस इज अपसेटिंग और दिस इज नॉट द राइट वे, जो भी आपको कहना है। बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू टेल देम व्हेन दे आर ऑलरेडी, वो दिमाग का पाड़ा चढ़ा हुआ है, जब आप तब बोलोगे तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, और गुस्सा करेंगे, और गुस्सा करेंगे, तो ऑब्वियसली यू आर मोर फियरफुल कि पता नहीं इसका रेपरकेशन क्या हो जाएगा। दैट इज नॉट द टाइम टू टॉक। लेकिन ऑफकोर्स बात तो करनी ही है, बात करनी है एट एनी गिवन टाइम, वेन एवर द मैटर इज ठंडा क्वाइट और कुछ नहीं हो रहा है, वेन दैट उसके रिलेशन में भी कुछ बात नहीं हो रही है, तब ये टॉपिक को खड़ा करना है कि भाई ऐसा हुआ था, वॉज इट रियली वर्थ इट, क्या हुआ, अपना फैमिली, अपनी फैमिली है, अपनी लाइफ है, हमें साथ रहना है, खुश रहना है, व्हाट कैन वी डू टू बी हैप्पी, व्हाई आर वी गोइंग थ्रू दिस। बट अगेन एंड अगेन सेम अगर प्रॉब्लम होती है, तो फिर और नेचर ही ऐसा है, तो मतलब कैसे, सी, इट वो टेक्स वेरी सुनने के लिए लॉन्ग। तैयार ही नहीं हो। एग्जैक्टली exactly. तो ये सुनने, वो अगर आप 10 दफा कहोगे तो वो एक दफा सुनेगा, बिकॉज हुएवर दिस पर्सन इज पास्ट 30-40 years की एज। तो जो बंदा 30-40 साल तक कह रहा है, कुछ कर रहा है, अगर आप उसे एक दफा कहोगे तो वो नहीं सुधरेगा ना। It will not be, and it is not easy even to resolve fear in your own self, when I say you have to work on yourself, जैसे हमने वो बच्चे का बोला था कि भाई when he scared, public speaking के लिए, तो अगर उसको मिरर के सामने बोलना है, तो वो जब पहली दफा में मिरर के सामने तो शायद अकेले में बोल दे, लेकिन अगर घर वालों के सामने भी बोलना है तो पॉसिबल है that he will not say it, he will have 10 attempts, उसके बाद वो बोल पाएगा। कभी थोड़ा बोलेगा, कभी वापस भूल जाएगा, कभी क्या होगा, then it will help. सो द सेम थिंग कि भाई दिस पर्सन हुएवर यू टॉकिंग ऑफ, उन्होंने इतने सालों से ही, दिस इज बीन द बिहेवियर, दिस हैज बीन, तो अगर आप एक दफा बोलोगे तो वो चेंज होना ही नहीं है, लेकिन यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप डूइंग इट। वो परस्यूसिवली जब आप करोगे तो वो एक दफा तो वो बट्टी लगेगी एंड इट विल मेक अ चेंज। मतलब अपनी बात प्रेजेंट करनी चाहिए पोलाइट वे से। हमेशा, यस, बात तो कहनी ही जी, चाहिए, ओके। बट हाँ डोंट जी, एक्सपेक्ट ओके। रिजल्ट इन द फर्स्ट टाइम। अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, मैंने बात की लेकिन देखो क्या हो गया, वही का वही हुआ, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही गुस्सा किया, वैसे ही किया, तो वो तो करेगा ही, बिकॉज दैट इज वॉट ही इज बीन डूइंग फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। तो उसको उसको तो फॉर, एंड मे बी दैट पर्सन इज नॉट इवन रियलाइजिंग कि ये गुस्सा है, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज द वे ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग टू हिम और हर दिस इज द वे ऑफ लाइफ, वो तो ऐसे ही करेगा। इट इज ऑन अस कि भाई अगर हमें सुधारना है तो एफर्ट करनी, एंड इट विल बी पेनफुल। ऐसे भी यू आर बेयरिंग पेन फॉर सो मच टाइम, तो इट विज नॉट गोइंग टू ओवरनाइट गेट ओवर। तो थोड़ी और टाइम अगर आप रखोगे तो इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, इट विल बेनिफिट फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। Anyone else? Anyone else? Anybody who has small children, put your hands up, please.
अरवा जी, जैसे खास करके बच्चों को जो मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे बहुत डार्क, मैं अभी स्कूल में सेशन है, बच्चों को ये रहता है कि मैम अंधेरे से बहुत डर लगता है हमको, खास करके ये डर बहुत बच्चों में रहता है, इस पे कैन यू गिव सम? यस, तो बच्चों को डर क्यों रहता है डार्कनेस से? और अगर बच्चे को पहले तो आप बात करो उससे कि भाई कुछ नहीं है, और कभी क्या होता है कि अगर छोटी सी डिम लाइट है तो वो डिम लाइट से जो शैडोज आते हैं, शैडोज हो गए, बाहर एक पेड़ है लेकिन द वे द ट्रीज फॉलिंग और उसका जो शैडो है, इट इज लुकिंग लाइक एज इफ वहां पे कोई बैठ के देख रहा है आपको, ये सब जब हो रहा है, सो यू आर स्केर्ड। वो बच्चे को डर लगता है, और वो डर क्यों है? बिकॉज द चाइल्ड इज सीइंग, ये कार्टून्स देखते हैं, फिर जब हम स्टोरीज बताते हैं बच्चों को तो ये सारी डरावनी चीजें भी बोलते हैं बच्चों को। तो बच्चा, जैसे मैंने बताया कि वो तो कोरे कागज के जैसा है ना, द इम्प्रिंट्स आर देयर। कभी आपने आपने नहीं तो कभी आपकी सर्वेंट ने या कभी किसी ने भी बैठे बैठे खाना खिला के टाइम पे, नैनी के बच्चों की नैनी अगर है तो वो भी कभी खाना खिलाने के टाइम पे या कुछ स्टोरीज बताएंगी या कोई मूवी की स्टोरी में कुछ ना कुछ होगा, एंड देन इट हैपेंस, एंड देन द चाइल्ड इज हैविंग दैट इन द माइंड। तो वो डर इसीलिए होता है। तो अगर बच्चे को डर है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चाइल्ड कि भाई अंधेरे से डर लगता है, इतने इसमें क्या है, क्या डरना है, कुछ भी नहीं, नहीं ना, इनिशियली लाइट चालू रखो, फिर धीरे धीरे लाइट को थोड़ा डिम करो, फिर बंद करो। द चाइल्ड विल गेट द चाइल्ड एक्लेमेटाइज्ड टू द डार्कनेस, एंड लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि भाई डार्कनेस में कुछ नहीं होता है। देन द चाइल्ड विल नॉट बी स्केर्ड। इट इज हाउ यू हैंडल द चाइल्ड। अगर आप उसे समझा के ये करोगे कि नहीं बेटा इट्स ओके ना, डर लगता है, ठीक है, चलो तुम्हें डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, ओके, थोड़ी देर लाइट चालू रखेंगे, लेकिन देखो अभी पूरी टाइम तो लाइट नहीं चालू रख सकते ना, इलेक्ट्रिक का बिल भी आता है, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आधा घंटा तो आप रख ही सकते हो जब तक वो बच्चा सो नहीं जाता है। सो इफ यू कीप दैट लाइट ऑन फॉर सम टाइम, एंड देन स्लोली स्लोली दैट ओके आज थोड़ी डिम लाइट रखते हैं, या एक यू आर हैविंग 4 लाइट्स ऑन, देन एक ही रखो, उसके बाद लाइक स्लोली स्लोली make the child understand that darkness is okay and nothing to be scared of. Very true, step by step. Thank you so much. Yes, Reena Por, can you unmute yourself? Yes, ma'am. Yeah, please tell your question. ये भी कोई क्वेश्चन नहीं था, वो पूछे थे किसके पास मतलब किसके बच्चे हैं वो रेस कर रहे हैं, इसलिए रेस किया। ओके, इसीलिए आपने रेस किया। तो यू टेल मी व्हाट आर यू टेकिंग बैक फ्रॉम दिस वेबिनार? आपने क्या था जो आप करते थे जो आपको लगता है कि आप यू वर इंस्टॉलिंग फियर इन योर चिल्ड्रन? अभी एक जो आपने एग्जांपल दिया था स्विमिंग का, जैसे मेरी लड़की जो है वो स्विमिंग क्लास के लिए स्कूल से उनको स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं ऑफिस क्लब में, तो वहाँ वो जैसे उनको डायरेक्ट डीप में जाने के लिए जो जो एग्जांपल आपने दिया था, तो वो मतलब सर ने जैसा लगता बोला था कि डीप में जाने के लिए, तो उसमें मन में वो फियर आते हैं। तो हर फ्राइडे को वो सेशन होता है उसका स्विमिंग का, तो उसको मतलब वो जाने का नहीं है उस स्विमिंग, तो उसको डर आता है। तो मैंने एक दिन उसको पूछा क्या आप क्यों मतलब व्हाई यू आर गेटिंग स्केर्ड, so she told me that that sir is telling to go in the deep water. So mommy, I cannot go. I'm getting very scared. And that and it और ये जो only 2-3 weeks जब उसने स्टार्ट किया था मतलब वो स्विमिंग का, और सर ने डायरेक्टली बोला कि अंदर जाने के लिए, so she was very scared. तो मैंने बोला अभी डू यू डोंट गेट स्केर्ड, आई विल टॉक टू योर टीचर। तो मैं स्कूल में जाके टीचर से इन्फॉर्म किया कि टीचर उसने अभी न्यू ज्वाइन किया है, तो वो डीप वाटर में, तो मतलब वो टीचर बोली हाँ सब बच्चे लोग उसी से डरते स्विमिंग के लिए, तो हम लोग को गाइड जो है उनको बता देंगे क्या उनको डीप वाटर में अभी फिलहाल मत लेके जाए। तो जब टीचर ने उसके सामने ऐसा बोला तो उसका वो फियर चले गया, तो अभी उसको अच्छा लग रहा है मतलब थैंक जाने के गॉड, लिए। बेटर, सो मच बेटर। तो ये अगर आप एग्जाम्पल एकदम शुरू था जो आपने बताया था। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप बच्चे को बोलते क्या डरना है, वो टीचर है ना, वो जो कहता है सही है, यू गो यू डू इट, अगर आप ऐसा नहीं तो बोलते, यू टेल मी उसका व्हाट वुड डर हैव नहीं हैपेंड टू जाता, द हाँ, चाइल्ड? तो वो और डर जाती थी। एग्जैक्टली, वो कर पाती, वो आपके डर के में, बिकॉज यू आर टेलिंग हर एंड यू आर द मदर, वो आपसे बहस तो नहीं कर पाती, एंड शी वुड हैव गॉन, लेकिन वो हमेशा डर डर के ही जाती। तो विद वो हाँ डरा हुआ, हाउ प्रोफेशनली स्विमिंग शी वुड हैव लर्नड। ठीक है, वो डर हाँ, के मारे कभी भी सीख उसमें भी जाती, हाँ लेकिन वो उसके हमेशा वो मन डर में तो मुझे बैठा ही डर नहीं, रहता ना। हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली, उसके मन इसी में वी मुझे नीड टू डर नहीं टॉक। डालने का था, इसलिए मैं हाँ, टीचर को मिलने गई। वेरी थैंक नाइस, यू मैम। really very well. That is exactly that, we need to talk to our children, बात करें उनसे, बहुत ज्यादा बातें करें,
they will come back to you. हाँ जी पुष्पा जी। हाँ मैम, मुझे ये मैम मैंने पूछना था। इसलिए रेस किया था क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है, ही इज जस्ट 7 years old, बट आई हैव नेवर सेड सच थिंग्स कि ये भूत आ जाएगा तुम खा लो, या ये आई हैव नेवर डन दिस, मे बी बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि ये डर नहीं डालना है बच्चों में, इट्स जस्ट दैट मैम। Really nice. Thank you. हाँ जी पुष्पा जी, अनम्यूट। मैम मुझे ये पूछना था कि see, when we were young, or we can say now we are very grown up and we are aware quite of it, but already what we have ingrained in them, the fears, how do we undo them? Because it is very difficult to undo. I think it is better to start from the beginning, but now वही तो है ना कि आप अपने फियर्स को आप क्वेश्चन करें कि भाई इज दिस फियर वर्थ इट, ये फियर सच्ची में है या आपका इमेजिन्ड फियर है. यू हैव टू क्वेश्चन योर फियर्स, एंड वी विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट 2 days, बिकॉज आज तो मैंने सिर्फ बच्चों को ये किया था ऑफ हाउ, बिकॉज द फियर एज आई सेड इट स्टार्ट्स फ्रॉम चिल्ड्रन. तो टुडे माय मेन फोकस वाज ऑन चिल्ड्रन, बट टुमारो इट इज कमिंग ऑन अडल्ट्स आल्सो. एंड ये आपको आंसर कल पक्का मिल ही जाएगा. And in case if you don't get the answer, tomorrow we will talk about this again. no, I will wait for tomorrow. Thank you. अच्छी एक Thank और you. क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि लोगों को लिफ्ट का बहुत, एलिवेटर्स का बहुत डर रहता है. Yes, वो भी आएगा, वो कल आएगा कि how will we help the child get away from the elevators, the fear of elevators. We have segregated this webinar in 3 different parts. तो वो it will come tomorrow or day after. Slowly you will, because अगर आज ही सब कुछ दे दूंगी तो then you will not be able to digest it all ना, फिर भूल जाओगे कि मैंने क्या बोला था. So we've broken it up. One more question I have, जी. like when my helper comes at home, so she was telling कि भाभी my daughter is not going school, उसको बहुत डर लगता है. तो उससे क्यों हुआ ऐसा? बोलती है उसको अच्छा नहीं लगता, लोग उसको चिढ़ाते हैं. तो मुझे लग रहा है somewhere it's like bullying happening. Exactly. भी डर होता है बच्चों को, like she's in Of like course. 7th 8th, तो उसने स्कूल जाना छोड़ दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सब चिढ़ाते हैं, बोलते हैं, मुझे डर लगता है उनसे, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो ये भी एक डर का ही रूप लेता है क्या? Yes, of course. That is also fear only ना, क्योंकि ये fear आता ही वहां से ना. बिकॉज अगर जैसे वो था कि भाई ये पब्लिक स्पीकिंग का, कि भाई सारे बच्चों ने उसके ऊपर हंसा, when all the children laughed, the teachers laughed, everybody made fun of him, and this went on for 3-4 days. The child lost total confidence of talking in public. Same thing ये बच्ची से, उससे बात करो कि वो उसे डर क्यों लग रहा है, क्या चीज का है. I'm not very good with Hindi movies and all that, लेकिन I remember certain scenes जो होते हैं, like वो मूवी में है कि भाई वो कॉलेज में जब बुलिंग होती है या स्कूल्स में जब बुलिंग होती है, एंड चिल्ड्रन विद लिटिल हायर दिस थिंग, हायर कैलिबर बोलो, those who are smart are bullying the children who are a little weak in studies, or even के those who are financially well off, they are bullying the ones who are not well off, or they're laughing on their clothes or on their or their bag, or their books, कि भाई सेकेंड हैंड बुक्स है या जो भी कुछ है. तो जब ये सब होता है, द चाइल्ड्स ईगो इज हर्ट, द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल वांटिंग टू गो विद दोज, उनके साथ क्लास में बैठने के लिए बहुत डर लगता है. दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज दे फील दे आर थ्रेटेन्ड विद देयर इज्जत. इट इज नथिंग टू डू विद द फियर ऑफ कुछ होगा उनको, वो नहीं है, लेकिन उनको एम्बेरसमेंट होती है. मोर देन द फियर उनको एम्बेरसमेंट होती है. दे डोंट वांट टू गो कि भाई सब मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे कपड़े सही नहीं है, या मेरी फ्रॉक फटी हुई है, इट इज स्टिच्ड अप, नई फ्रॉक नहीं है मेरे पास, आई एम वेयरिंग लास्ट ईयर्स यूनिफॉर्म ओनली, क्या है कैसा है, वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस. लेकिन दिस विल ओनली कम व्हेन यू टॉक टू द चाइल्ड कि भाई क्या है, व्हाट इज इट दैट इज बॉदरिंग द चाइल्ड, Because she's or not, is it some teacher who's see, we are all humans, even teachers can be insensitive, नहीं होना चाहिए, और mostly नहीं होते भी है, लेकिन sometimes there are some ones who are, so maybe the teacher is insensitive, so we don't know, हमें नहीं yeah, but पता कि she's क्या. not listening to the mother. So I told her कि you get your daughter at my place, I'll talk to her, I'll ask her, and if you need any help, we have a counselor in Jeevanjan, we will definitely provide a help to the child, so that at least basic education तो बच्चे का होना चाहिए ना ऐसे. Of course. लेकिन उसे फोर्सफुली स्कूल भेज के वो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा. वो क्यों डर रही है, why she doesn't want to go, that is a very important thing to know.
और ये भी नहीं पता, I mean, so much is happening these days. We have to talk to the child. What if there is some abuse also going on? Physical abuse, mental abuse, क्या हो रहा है? We really don't know. So till the child does not talk, if the child is not happy, we have to talk to the child. Sure, I'll take this one. Thank you so much, Arvaji. Pleasure. Yes, Buaji, can we conclude? It's 8:08 now. Yes, it is now 8:08. So I'm feeling very sad. Actually, no one is on the put on the video. No one is put on the video. They always want your message. They don't want us to see their beautiful faces, Buaji. No, we want to see your beautiful faces. Bachcha, we want to see your beautiful faces. Zainuddin, Utku, Because Rashida. when the speaker is speaking, we see your all the expressions and all. We are also inspired. Bachcha. We are all inspired. We Yes, can of make it course. from your faces कि आप लोग अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है. So we get inspired. So हमारा बस खाली बहुत यही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, ma'am. Thank you so much. आपकी दक्षिणा इतना ही है कि आप लोग खाली अपने कैमरास को ऑन रखो बस. I think we can Adieu, thank thank Buaji and Arvaji. इन्होंने इतने एफर्ट्स डाले. रितु जी, आशा जी, मुझे नाम ना लेना पड़े. जैनुद्दीन, राशिदा, सीमा, तजिंदर, मिन्नी, रविंदर. Just we can show this respect to her and Arvaji. What they are giving, it's like we all can feel that, you know. So now you understood from this platform that we as parents, beshak you are young, beshak you are grandparents, we have to educate ourselves. It is we who have inculcated all this fear into those children. No fault of us because we were not educated. We were not elevated about this education. ये तो आज की पढ़ाइयाँ चल रही हैं. So we are trying to uplift ourselves. So please attend. And जो भी गलतियां हम लोगों से हुई हैं सब सुधार सकते हैं. No problem. It is never too late. Never too late. We can always take a U-turn. So my humble request to all of you that whatever you see in the child when they are growing up, go back to the childhood, find out where we have gone wrong. Where we have gone wrong. No blame game, but yes, check yourself, educate yourself. So today we end the session and we are going to meet you tomorrow at 7 o'clock sharp. Please do not miss. It is my humble request to please do not miss. Yeah, Because we have to educate, each and everyone has to educate ourselves. It is doing it for ourselves. आज हमारे बच्चों को फर्क पड़ता है तो हम खुश होते हैं. बच्चों को देख के ही हम खुश होते हैं. आज हम बड़े दुखी होते हैं जब अपने बच्चों को देखते हैं तो हम बड़े दुखी होते हैं. We are getting opportunities, so take these opportunities and please come to all the next 3 sessions. And thanks to Arwa, beautiful eye-opening. So Thank you. I say you rocked it and a salute to you, Rav. Thank you, ma'am. God bless Thank you. So all Thank you, smile. Didi. I'm going to Thank you, Arva Didi. Thank you. Thank you. It was very nice. Thank you so much. Thank you. I will share the video in the group to everyone because I know, you know, one time we just listened today. We need to listen. I remember I worked with them, but then to, you know, when I walk, I listen it because I want to, it should go and touch my heart because I want to change myself. I want to walk on that. So it's my humble request to everyone कि एक बारी में नहीं, I understand we are human, you know, इतना सा जाएगा. और कल वॉक करती हूँ, कल सेशन के पहले मैं भी आप लोग को YouTube में शेयर करूंगी लिंक. आप लोग दोबारा सुनिए जी. और मैं कोशिश करूंगी अगर मैं कोई पॉइंट्स बना सकती मैं डालती हूँ. अगर आप लोग को भी कोई पॉइंट्स याद आते हैं आज क्या सीखा है, यू ऑल कैन पुट इट इन द ग्रुप. सब लोग डालो मैंने आज क्या सीखा, मैं क्या टेक में लेके जा रही. वो जी कैन वी ओपन दिस ग्रुप फॉर दिस थिंग? Yes, of course. Why not? Definitely Of course. open it up. Open it up. भी श्वेता ने 4 पॉइंट डाले, भगवान दास ने डाले, मिनी ने 4. तो क्या होगा, मे बी मैं वो पॉइंट मिस कर गई बट जब श्वेता का देखा तो मुझे याद है कि हाँ आज अरवा जी ने मुझे ये मार्टिन का एग्जांपल दिया था, है ना, उससे चिढ़ा. So I want to put up a question to all of you. A question before I leave. Do you really want to help your children? Let it be the tiny tot, let it be the youth, or let it be the children of 50 years. Do you really want to help your children? Put Yes, thumb yes. whoever wants to. Yes. Want to help Yes, us? we all want to. Fast, all want to. So educate Yeah. yourself. Educate. Yeah, we all want to. Yes. So educate yourself and attend the sessions. So good night to all of you. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Good evening to all of them. See you tomorrow at 7 o'clock sharp.